Okay, hi everyone. Good evening, all. So from today we are starting one of the project. So basically in SQL, project means what? Can anyone tell me what kind of projects should be there in SQL? We can consider any of the rough idea or anything. 1 minute. Analyze the data, maybe Sorry. analyze the data through queries any query, maybe select query or maybe order by. Yes. Means basically project or case study we can consider as the same thing, right? In SQL. So there Yeah. will be multiple tables they have given us. Uh, they have given us multiple tables, and after that tables, there should be some relationship between those table. And from that tables, we need to analyze the data set. And after that, uh, they will provide few of the queries, right? Like around अभी सर बता ही रहे हैं सब कुछ फ्री में बताओ कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ लो so. Uh, they will provide us 10 to 15 queries और 5 to 10 queries and from that उसमें से हमें वो क्वेरी को समझ के उसका हमें आंसर देना होता है, राइट? सो उसी का नाम एक्चुअली प्रोजेक्ट होते हैं एक्चुअली मेन। कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन या ऐसा कुछ तो इसमें हम बना नहीं सकते, राइट? एसक्यूएल में तो बेसिकली क्वेरीज के ऊपर ही प्रोजेक्ट्स होता है। तो वही आज हम लोग देखेंगे। और हमारा ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें हम ये जो मैंने कंसेप्ट यूज बिलो, सो ये जो मैंने लिखे है वही कंसेप्ट हम सारी क्वेरीज में हम यूज करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क मी एनी टाइम, दे कैन पॉज मी एंड आस्क मी अ क्वेश्चन। सो इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये सम एंड काउंट एग्रीगेट फंक्शन है, फिर डिफरेंट रैंकिंग फंक्शंस होते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, राइट? कि रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक एंड एंटाइल रैंकिंग फंक्शंस होते हैं। फिर ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय क्लोज का हम यूज करेंगे। फिर डिफरेंट केस स्टेटमेंट्स का भी यूज करेंगे और कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस का भी हम यूज करेंगे। 1 मिनट। तो ये जो सारे कंसेप्ट मैंने लिखेंगे उसका हम यूज करेंगे। और एक चीज यहाँ पे ये सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें से जितना भी हो सकता है 5 या 7 क्वेरीज वो हम आज परफॉर्म करेंगे। तो अब ये हमारा डेटा सेट है। यू कैन एबल टू सी एक्सेल फाइल राइट इन माय स्क्रीन। Yes. ओके। तो ये हमारा 1 मिनट। ये हमारा डेटा सेट है एक जिसमें एक सेल्स टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट आईडी कॉलम दिया हुआ है। कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट एंड प्रोडक्ट आईडी। फिर ये एक हमारा मेनू टेबल है जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस कॉलम दिया हुआ है। और एक हमारा है मेंबर्स टेबल जिसमें कस्टमर एंड, और यू कैन से दैट कस्टमर आईडी एंड ज्वाइन डेट। तो वो पर्टिकुलर कस्टमर आईडी कब ज्वाइन हुआ था वो दिया हुआ है। तो आप तीनों टेबल में देखोगे ना तो तीनों टेबल में कोई ना कोई रिलेशनशिप्स अवेलेबल है, राइट? जैसे कि यहाँ पे सेल्स टेबल में जो है वो
प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी और मेनू टेबल में प्रोडक्ट आईडी वो दोनों कॉलम है, कॉलम कॉमन है, राइट। फिर वही कस्टमर आईडी, यही कस्टमर आईडी अगर आप देखोगे सेल्स टेबल में और मेंबर्स टेबल में कस्टमर आईडी देखोगे तो वो भी कॉलम कॉमन है, राइट। सो कोई ना कोई तरीके से यहाँ पे इस तीनों टेबल का रिलेशनशिप्स हमारे पास अवेलेबल है, राइट। सो इसी टेबल को एनालाइज करके हमें कुछ कुछ क्वेरीज दी हुई है और उसको हमें आंसर देना है। सो वही बेसिकली प्रोजेक्ट होता है जिसमें जो भी हम कंसेप्ट जानते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं वही हमें मेन सीखना होता है। तो हम वन बाय वन देख देख डायरेक्टली स्टार्ट ही कर देते। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क मी, राइट। सो अब हम डायरेक्टली राइट स्टार्ट कर देते कि व्हाट इज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट, कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंट एट द रेस्टोरेंट। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ईच कस्टमर स्पेंट एट द रेस्टोरेंट। तो यहाँ पर टोटल कितने कस्टमर है, कैन एनीवन टेल मी फ्रॉम दिस डेटा सेट। 3 list of customers. 3 different customer, right? Yes. Okay, A, B and C, right? Now, so all and 3 different customers, and we need to identify the amount, right? Amount. So amount is given in which table? Menu table. Menu table. Okay, amount is given in menu table. So how can we join this sales table and menu table? By using the product is the column. Okay, by using the product ID, right? Okay. Now here, what we need to do, which function we can use over here? Can anyone tell me? Some function and Okay, group by. some function and group by. Okay. So now, now let me write the query. How can we write the query for the same? Danny. This is our main table, right? Sales table is our main table. Then we need to do inner join, right? In inner join, which table we need to join? Menu table, right? Menu. So menu table s dot product id equal to m dot product id. Now s dot, what is the total amount each customer spent at the restaurant. Now what will be our first column over 1 minute? What will be our first column over here? This is our Customer ID. Customer okay. ID. Okay, customer, 1 minute. Okay, now what we need to do? And sum of price. Sum of, Okay, sum of price. So that table we can mention alias name. Yes, sum of price. okay, now Group by. And group by functions. Group by S dot customer ID. group by customer id. Okay, so this should be our answer of the first query. Customer A has spent total 76 amount, B has 74 and C has 36.
So this is our result of the first query. Now let's jump to the second one. How many? Let me copy this data into the Excel file. Copy this query. Okay. How many days has each customer visited the restaurant? How many days has each customer visited the restaurant? So We need count of days, okay? Right? count of days. Yeah. How many days has each customer? So it's a count of days, I can say. But Each customer. where is the days column is given days? Not days, like date wise, order date, maybe. Okay, order date. Okay. So let's just directly write the query. Select a star from. Okay, now what we need to do? Count of, count of, First we need to mention customer ID, right? yes, Because yes, yes, how many days has each customer? So whenever you yes, yes. find the each customer or kind of keyword at that time, either you need to write group by as well as either you need to write partition by Yeah, party, because each customer, each product, we need to yes, identify the detail by each category or each, right? So yes, here yes. customer ID we need to write. Okay, now then. Then count of the order, second column name I don't remember. Okay, count of Count of Order date, order date. order date. Order date. order date. Okay, is okay now. And Group group by by customer. group by customer ID. Okay, now let me try to execute this query. A has 6 days, Yeah. B has 6 days, and C has 3 days. Okay, Yeah. A 1, 2, 3, 4, 5, 6. B 1, 2, 3, 4, 5, 6. C has 3 days. Okay, now I think there might be looking some problem over here. From my point of view, here we need to write the distinct keyword. Distinct keyword. If it is not, if not our count of is repeated, okay. If S- count is repeated, so is not used to distinct. yes, because if you see over here, order date, right? So order date 1 1 Hmm. is repeating 2 times. Yes, 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 Then yes. order date 11 1 is also repeating 2 times, right? Then for तो मेरा क्वेश्चन ये है सपोज ऑर्डर डेट वन है तो उस दिन सेम डे ए जो कस्टमर है वो टू टाइम्स गया हमको यही काउंट्स ऑफ विजिट चाहिए ना कितनी टाइम्स वो ना गया ना काउंट ऑफ विजिट्स नहीं है, काउंट ऑफ डेज है, काउंट ऑफ विजिट्स नहीं है, हाउ मेनी डेज काउंट है. ऑफ हाउ मेनी ओके ओके फाइन 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 ओके फाइन गॉट इट राइट. अगर विजिट होता तो शायद डिस्टिंक्ट हम निकाल देते, लेकिन डेज है ना, तो डेज तो हमें यूनिक ही यस कंसीडर यस करना होगा, राइट? यस 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 फाइन फाइन Okay, so this should be our result set 6 4 and 2. Actually I have write the solution below one, so for that also we can compare. 1 minute, how many days? Okay, this should be equal to 6 4 6 2, right? 4 6 2. Okay, perfect. Okay, now let's jump to the 1 minute. Actually please mute Nidhi. If you are not speaking, then please mute anyone. Okay, now let's jump to the third query. This is our third query. 1 minute.
So what was the first item from the menu purchased by each customer? What was the first item from the menu purchased by each customer? सो यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेल फाइल में फर्स्ट आइटम फ्रॉम द मेनू परचेज्ड बाय ईच कस्टमर. सो नाउ कोई कैन Product ID. मैंने मैंने सुशी ऑर्डर किया फर्स्ट. ओके फाइन. वन मिनट या मीन्स फॉर समवन कैन टेल मी A has purchased which product सुशी for the then the first. product ID is one. Sushi. Okay, sushi and one. What is the other? Is there any other also? Uh, first item. Okay, A First B. item, no? B also B is order curry. Second Okay, product ID. B. Okay, B curry. Okay, Product ID two. and C. And three. It's what's product ID three. What's the name? Raman. Ramen. Ramen. Okay. So here there is one catch over here. If you see for A, right, for A, there is a same date is available. Means for Yeah, the yeah, same day he has purchased something, right? And two yeah. Okay. different product ID, one and two. Mhm. So here we need to Yes. consider sushi and curry also. Sushi and curry also. So for A, we can say that sushi But and my question is, but in question is saying that first item what is order, not second. Oh, second time order है ना, or second वाला. uh, मतलब first time means first. Uh, actually okay, we need to look into the Yeah, order. exactly. We need to look into the order date column only. ऑर्डर डेट okay. कॉलम अगर सेम है राइट, ऑर्डर डेट कॉलम ए के लिए दो Okay. बार सेम है राइट. सो Okay. और तो दोनों बार मतलब प्रोडक्ट सेम डे आईडी. में मैंने कितने प्रोडक्ट उसमें ऑर्डर किया. अगर सेम डे पे अगर थ्री प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दो, थ्री हमको हाँ हाँ, तो हमें मतलब. तीनों दिखाना पड़ेगा. ओके ओके फाइन फाइन फाइन. अब इसके लिए हमें क्वेरी राइट करना है. ये तो हमने समझ लिया कि क्या आउटपुट होना चाहिए, ये हमने समझा. अब इसके लिए हमें क्वेरी राइट करना है. नाउ कैन एनीवन ट्राई नाउ. एक So let me start. Select star from Denny dinner dot sales table S. Now we need to identify the product name, right? So that हमें यहाँ पे मेनू टेबल का भी join लिखना पड़ेगा. inner join. We need to write the join of the menu table also. So inner join menu M on S dot product ID equal to M dot product ID. Now now let me write menu purchased by each customer, right? So once again purchased by each customer. So in that case either we need to use partition by clause or either we need to use group by clause. So add dot customer ID. Now product name. So M dot product name. ओके, अब कोई बता सकता है क्या, कुछ क्या कर सकते हैं हम, किसी को कुछ भी आइडिया हो. रैंक थ्रू रैंक के थ्रू हम करेंगे क्या? रैंक के थ्रू To create the window functions, right? maybe window function with Yes, yes, rank. right. Let me write it. We can use the rank function or dense rank function. Anything will be fine. So let me write it rank over. Now what we need to do? Partition by Partition by Partition by. product ID. No. custom वो Product, did product second ID, option right? is product ID I mean. So No, second no, no, option no. Product ID. Product ID. No, What no, you no, mentioned. no, 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 no.
जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। आपको ये पढ़ना है, ये जो है ना, मेनू परचेस्ड बाय ईच कस्टमर। Yeah. तो हमेशा Okay. याद रखना, Customer ID, right? ओके, हमेशा याद कस्टमर। रखिएगा कि ईच के बाद जो कीवर्ड हो ना, उसी के लिए हमें पार्टीशन करना होता है। ओके ओके, फाइन। Okay. ईच Okay. Okay. Fine. कस्टमर है तो कस्टमर आईडी को ही पार्ट, बिकॉज हमें कस्टमर आईडी वाइज फाइंड करना है, राइट। सो नाउ Yeah. Right. Right. ऑर्डर बाय में हम क्या करेंगे अब? व्हाट वाज द फर्स्ट Product आइटम name. फ्रॉम द मेनू? क्या क्या? Product ID. नो, Product name. कस्टमर नेम। नो। कस्टमर आईडी। ये एक मिनट, ये आपके Order सामने। date. Order date. Order date. हाँ, ऑर्डर डेट। Order date. कैसे पता चलेगा फर्स्ट आइटम कौन सी है? डेट के ऊपर ही पता चलेगा, राइट। Right. Right. We can का decide the based on सो ऑर्डर time period. डेट करेंगे और इसको हम दे देंगे एलियास एज आर के। ओके ओके। नाउ लेट मी 1 मिनट। एक्चुअली किसी के बैकग्राउंड में कोई थोड़ा। ओके, ऑर्डर डेट। ओके, 1 1। ओके, अब हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ कैन एनीवन टेल मी? अब कोई बता सकता है? ये मेरा रिजल्ट आया। एक मिनट, एक बार फिर से आपको दिखाता हूं। ये मेरा रिजल्ट आया। व्हाट वाज द फर्स्ट आइटम We परचेज can बाय? mention the where condition where rank equal to 1. ओके, वेयर? Rank what is the alias name is RK equal to 1. ओके, ये चल जाएगा। Yes. ये दे दिया उन्होंने एरर। Yeah. Right. तो अब इसका सॉल्यूशन, एक्चुअली RK is not a specific column, right? RK is not a specific column in our table, in our both the table, so we cannot use RK in the where clause, right? Okay. RK is a customized column which is generated by ourselves, right? So we cannot use directly over here. Now what is the solution for this? Can anyone tell me? We can use CTE or inner query. Exactly, right. So here we can use the city. I'm using one thing, other thing you can tell me, right? Inner query. CTE, then I will remove this one, then select star from city where RK equal to 1, and I will 1. Right. okay, I will mention all the columns. Now these are the first item purchased by the customer, right? Now over here we also you need to use distinct, so we can use directly distinct star. Let me try this one. Now it is coming 4 record, right? So Yes. Yes. I think, is this wrong? Anyhow it is wrong, or everyone has purchased on the same date? 1 1, then B. Okay, that's B on the same date, C on the same date. Okay. Okay, so this is the solution. Let me match up with my solution in the my query. First item, which was the first item bought by each customer, right?
So now we can compare where we have written this one, right? Okay, this one and this one both are same, right? A curry, A sushi. So A curry, A sushi, B curry and C ramen. So here we have used the rank function as well as city, right? Now you let me try with the inner query. Can anyone help me to write the inner query for the same solution? Yeah. Select Select star star. from temp table. Select star from. Yeah, Star from open we can bracket. open the bracket and adapt the where condition. We can write the Okay. close. Now, No, you can mention where condition in outside the query. okay. Now, okay. Now let me try. You can use temp over there. Temp. Okay, exactly correct. Right now, here we can use distinct. So here we can give any of the alias. It is not necessary to give temp only, right? It Yes, is yes. Yeah, not, yes, we can exactly. give We A, B, C. We can write our name anything also. on the alias field. Anything will be fine over here. Now let's jump to the fourth query. So here we have used the ranking functions, join concepts, city, inner query, all the concepts we have already used over here, right? Now let's jump to the fourth query. So now let me, okay, let me, what is the most purchased item on the menu and how many times it was purchased by all customers? What is the most purchased item on the menu and how many times it was purchased by all customers? Okay. So does anyone got this question? Could you see Yeah, the question? which What is which the which purchase? customer most purchased item? For each customer, most purchased item, right? Most purchased item. Count of Yeah, right. Okay, for all, okay. Now how can we write the solution for the same? Here we can write s dot customer. Now Customer ID. customer ID. Now Count of product ID. okay, count of product ID Product ID. group by. And customer ID. customer ID. Okay, it is giving 663. Uh, what is the most purchased item on the menu and how many times it was purchased by all the customers?
Most purchased item. I think group by product ID it will become right. Actually, by all the customers. Okay. Actually, over here, what we need to identify here, we need to identify the most purchased item purchased by all the customers, not by each of the customers. सो इनमें से कोई एक ही आंसर आना आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहां पे हम देखेंगे ना कि यहां पे हमें एक्चुअली किसी प्लीज बी ऑन म्यूट एस डॉट प्रोडक्ट आईडी एंड और वी कैन से दैट प्रोडक्ट नेम ग्रुप बाय प्रोडक्ट नेम। तो ये जो रमेन प्रोडक्ट को 8 बार परचेस किया हुआ है, करी को 4 बार और ये सुशी को 3 बार परचेस किया हुआ है। सो इसमें से अब नाउ अब कोई बताएगा कि मोस्ट परचेस कौन सा प्रोडक्ट है इसमें से मोस्ट परचेस्ड। हेलो Count of product ID is 8, so that is the maximum value. Actually, ओके we will हाँ get the ओके। only that one only. Yeah. तो अब मुझे वही मुझे वही रिकॉर्ड चाहिए। तो वही रिकॉर्ड को मैं कैसे मुझे मिलेगा वही रिकॉर्ड। अब मुझे इस क्वेरी में क्या करना होगा कि 8 वाला रिकॉर्ड और उसका नाम आ जाए। Again, same inner join we can use or CTE we can use. ओके Or else, yeah, we can use the order by. ओके चलो ऑर्डर बाय। Count of product name. That means city. ओके सिटी Order by descending limit. ओके Yeah. डिसेंडिंग ओके ओके। अब क्या करना होगा। We can use limit function over here. Limit. एक्चुअली आई But थिंक in Oracle, it लिमिट not working लिमिट जो anymore. है ना Not वो limit. पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में आता है। यहाँ पे मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं चलता है Yeah, in लिमिट। Oracle, not working. सो दूसरा ऑप्शन टॉप में इशू है, टॉप वाला चाहिए। ओके वी You कैन can यूज create the ranks. टॉप Top. वन। Yeah, yeah. Yeah, top one. सो ये आ गया राइट रमेन। Yeah, okay. Ramen is the product which has been most purchased by all of the customers. So jump to the fifth query. Which item was the most popular for each customer? Which item was the most popular for each customer? Popular. Same query, but here we can mention group by is a customer ID, right? For each customer, which product will be
most he purchased. तो okay, Yeah, here group by also we can mention customer ID. si- 6 and 3 is coming, right? 6 and 3. Now, most popular Yeah, for right. each customer. Now let me compare this one with my solution. 663. Which product? यहाँ पे और उसमें okay, now can anyone understand this query? Actually, this is the correct answer. Number which item was the most popular for each customer? B. Okay. So यहाँ पे Yes, right, right. every customer has purchased different products, right? Different products number of times. So what I have done over here, select customer ID, then product name, then count of product ID I have written over here. So इससे मुझे पता चलेगा कि कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट कितनी बार परचेस किया हुआ है, राइट? कस्टमर आईडी ने कौन सा प्रोडक्ट नेम कितनी बार परचेस किया हुआ है, उसके बाद उसके बाद वही दोनों कॉलम पे ग्रुप बाय कर दिया है, कस्टमर आईडी और प्रोडक्ट नेम कॉलम के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे रैंक रैंक दिया है, रैंक बेस अपॉन वी नीड टू आइडेंटिफाई फॉर ईच कस्टमर, राइट? फॉर ईच ऑफ द कस्टमर. सो यहाँ पे पार्टीशन बाय में क्या आएगा? कस्टमर आईडी आएगा. ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय में मुझे आइडेंटिफाई करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स वो परचेस्ड मैक्सिमम होना चाहिए, राइट? नॉट मिनिमम, मैक्सिमम होना चाहिए. तो ये मुझे क्या देगा कि ए, ओके 1 मिनट, आई विल रन दिस क्वेरी ओनली फर्स्ट. ये मुझे क्या देगा कि ए जो है, ए ने रमेन 3 बार परचेस किया हुआ है, राइट? फिर ए ने करी 2 बार परचेस किया हुआ है, और ए ने सुशी 1 बार परचेस किया हुआ है. ये तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी के बाद डिसेंडिंग लिखा है. अगर डिसेंडिंग नहीं लिखता तो मेरा आंसर गलत आ जाता है, राइट? यू आर गेटिंग दिस वन, राइट? Yes, yes, Harshit. Yeah, yeah, right. ओके. सो इसीलिए मुझे हाईएस्ट नंबर ऑफ परचेजेस चाहिए, लोएस्ट नहीं चाहिए. तो हाईएस्ट को मैंने क्या दे दिया? हाईएस्ट को मैंने रैंक 1 दे दिया. फिर अगेन बी में हाईएस्ट क्या है? तो बी में ये तीनों हाईएस्ट है, क्योंकि तीनों दो दो बार परचेस हुआ है, राइट? तीनों दो दो बार परचेस हुआ है, इसलिए तीनों हाईएस्ट है. तो तीनों को 1 1 1 रैंक दे दिया. और सी के अंदर ये एक हाईएस्ट है, तो इसको 1 रैंक दे दिया. अब सिंपल में रैंक इक्वल टू 1 करके फिल्टर कर लूंगा रैंक. तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा कि कौन सा कस्टमर ने कौन से प्रोडक्ट मोस्ट पॉपुलर है, मींस कितनी बार वो परचेस किया हुआ है. ओके, नाउ लेट्स jump to the another question. Harshit, can you speak in English? Like, it's a little bit. Okay, in English. Okay, okay.
Now let's understand the another problem. Which item was purchased first by the customer after they become a member? Okay. नाउ यहाँ पे कोई बता सकता है इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स रखूंगा. मे बी सम ऑडियंसेस आर फॉर हिंदी ऑल्सो. Okay, you got this question right. Which item was purchased first by the okay, which item was purchased first by the customer after they become a member? अब ये मुझे एक्सेल फाइल में कोई बता सकता है आंसर इसका? Yeah, customer ID A ओके, कस्टमर आईडी ए. is first purchase is curry 2. ओके, फर्स्ट परचेज इज करी. ओके. Curry. Yeah, seventh he joined. And B, ओके, ए who is वन मिनट. आई purchased एम first item. बी बी के लिए Okay. And B, he purchased sushi. वन. He purchased 11th January 2021. Yeah, 11th. He joined on 9th. He purchased 11th. ओके. सुशी. Sushi, yeah, right. ओके, और सी 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 में Yeah, that. कुछ Full आएगा? members are only joined. He not joined as a member. सी में कुछ भी नहीं, राइट? No, no, no. No one can be joined. ओके ओके, नो वन इज जॉइंड. ओके. नाउ वी नीड टू राइट द क्वेरी फॉर द सेम. Now, can anyone help me to write the query for the same? Okay, let me try. Select star from sales S. Inner join S dot product ID equal to M dot product ID. अब मुझे यहाँ पे और कोई ज्वाइन लगाना पड़ेगा क्या? Can anyone tell me? राजा, राकेश, निधि. Uh, we can join one more using customer ID, right? Okay, but what is the need of this one more join? You are getting. No, no need. Actually, if we join the another, then we can get the product name only. Uh, no need. Actually, it is a Yeah, needed, right? no need, no need. No, 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 it is a needed no, to know because we need to compare this to know the date. product name only, right? We need to compare this joining date as well as order date. Yeah, we can take the two tables only, sales table and members tables also. We can get the data, but there we don't know product name. So we will come definitely know product name. Then only we can join the menu table. Otherwise, we can use the two tables only, right? But We can but get the here results, sales and here member here they have mentioned which item was purchased first. So item means what? Product name, right? product name.
name. So So yeah, name, then so only we can use the three tables, right? okay, So name भी चाहिए, right? So name also want. So we need to join three tables. Okay, members own, members dot क्या customer ID equal to yes, right. s dot customer ID. Okay, now s dot customer ID, s dot order date, s dot m dot Product name, product name and mem dot. join date. ओके नाउ अब मुझे कोई बताएगा आप क्या कर सकते हैं which I which item was purchased first by the customer after they become a member. तो यहाँ पे एक साथ है एक साथ join date greater or greater than equal to members. तो यहाँ Harshit, पे हमें एक क्वेरी लगानी होगी where s dot order date greater than equal to mem dot join date Join date. s dot order date greater than equal to mem dot join date ये हमने कंडीशन क्यों लगाई बता सकता है कोई ठीक है वो मैं बताता हूँ बाद में अब हमें क्या करना होगा First ओके run the query. What we will get after that we will decide. ओके ओके अब कोई बता सकता है Then we create no. the rank based on the order data. या एग्जैक्टली रैंक ओवर नाउ Partition by order date. again you are making one mistake partition by Okay. always customer id Okay. Customer ID. Yeah, right. Customer ID. partition by customer And order id by order by order date. Order by order order date date. यहाँ पे डिसेंडिंग आएगा कि नहीं आएगा कि No, चले no, no. Not required. ओके नॉट रिक्वायर्ड इज आर के Not. ओके नाउ If we mention the descending, it will. If we mention the descending, it will get the whoever last date. We can order that one. yes yes right now we need to do simple right we can encapsulate this block Rank select equal to star from select city star where from city rk equal to 1 rank equal to rank equal to 1. That's so now let me execute this query so this is perfect right yes. curry and sushi what we have Yeah, right. mentioned in the excel curry and sushi right same thing Harshit, can you explain that Exactly. query again? Little confused. okay okay so now what is our requirement english hindi anything will be fine right You can speak in English if because okay so here we have joined the three different tables right now what is our requirement which item was purchased first by the customer after they become a member अब आइटम है आइटम सो आइटम किस टेबल में हमारा प्रेजेंट है आइटम मींस प्रोडक्ट नेम राइट सो मेनू टेबल में वो हमारा प्रेजेंट है तो हमें मेनू टेबल का रिक्वायरमेंट होगा राइट अब yes. कस्टमर कस्टमर है तो कस्टमर हमारा मेन सेल्स टेबल है
तो सेल्स टेबल का भी रिक्वायरमेंट होगा। Yeah. और अब आफ्टर दे बिकम अ मेंबर, सो मेंबर टेबल का भी रिक्वायरमेंट होगा, राइट। Yes. तीनों टेबल का रिक्वायरमेंट होगा, तो तीनों टेबल का हमें ज्वाइन मारना पड़ेगा, राइट। अब ज्वाइन Okay. मारने के लिए यहाँ पे हमारे पास कॉलम अवेलेबल है, राइट, तीनों टेबल में। तो सेल्स का और मेनू का प्रोडक्ट आईडी के बेस पे ज्वाइन होगा, और सेल्स का और मेंबर्स का कस्टमर आईडी के बेस पे ज्वाइन होगा, राइट। Okay. इतना पता चल गया, इतना पता चल गया, राइट। ये हमारा आ गया रिजल्ट, इतना पता चल गया, राइट। नो कंफ्यूजन ओवर हियर, राइट। Yeah, yeah, yeah. सो नाउ you need to look into the join date. सो Yes. जॉइन डेट क्या है? जॉइन डेट है ए की 1 जुलाई है, और बी की है 1 सितंबर। Yeah. अब हमें अब क्वेरी को रीड करना होगा कि विच आइटम वाज परचेज्ड फर्स्ट बाय द कस्टमर आफ्टर दे बिकम अ मेंबर। तो मेंबर कब बना था? ए मेंबर बना था 1 जुलाई को, और बी मेंबर बना था 1 सितंबर को। सो नाउ 1 जुलाई के बाद जब उसने ऑर्डर किया होगा, या 1 जुलाई को उसने ऑर्डर किया होगा, तो हमें दोनों कंसीडर करना है। वी नीड टू कंसीडर बोथ, राइट, वेदर ए हैज ऑर्डर ऑन द 1 जुलाई और आफ्टर द 1 जुलाई। तो यहाँ पे फास्ट Oh. ए ने ऑर्डर कब किया था? ओन ए ने ऑर्डर किया था 1 जुलाई को ऑर्डर किया था, राइट। Yeah, yeah. यू आर वाचिंग दिस वन, राइट, दिस लाइन 1 जुलाई। Yes, yes. सो 1 जुलाई को इन्हें ऑर्डर किया था। अब 1 जुलाई को वो डेट अगर जॉइन डेट के साथ कंपेयर करेंगे, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, राइट। Okay. 1 जुलाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 जुलाई इन मेंबर्स टेबल, राइट। Yes, yes, yes. नाउ कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया था? प्रोडक्ट 2 ऑर्डर किया था, राइट। Yeah, yeah. प्रोडक्ट 2 ऑर्डर किया था, तो वही प्रोडक्ट 2 को हमें मेनू टेबल में फाइंड करना पड़ेगा। प्रोडक्ट आईडी 2 में क्या है, और उसका नाम क्या है प्रोडक्ट आईडी 2 का? Curry, curry. सो दैट इज अवर आंसर, राइट। अब उसी चीज को यहाँ पे क्वेरी में लिख दिया है कि एस डॉट ऑर्डर डेट ग्रेटर देन इक्वल टू मेंबर डॉट ज्वाइन डेट। अब हम करेंगे, अब यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा किया। ओके, मैं इतना बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारा आंसर रिजल्ट सेट आया, उस पे हमें क्या करना है? उस पे हमें करना है, अगर ऑर्डर डेट और ज्वाइन डेट को कंपेयर करोगे, तो हमें पहला पहला रिकॉर्ड ही दोनों का चाहिए। 4 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, 3 रिकॉर्ड नहीं चाहिए, हमें पहला पहला रिकॉर्ड ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या मेंशन किया है? परचेज्ड फर्स्ट बाय द कस्टमर। Okay, okay. परचेज फर्स्ट का मीनिंग क्या हुआ? पहला ही रिकॉर्ड चाहिए। After becoming a member, we have to find out that order, customer. Yes. Right. यहाँ पे परचेज लास्ट या परचेज सेकंड या परचेज थर्ड होता तो कुछ और करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे परचेज फर्स्ट लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे अगेन रैंक फंक्शन का यूज किया। क्योंकि परचेज फर्स्ट हमें कैसे वैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हमारे पास दूसरा और कोई तरीका अभी नज़र नहीं आया, तो हमने रैंक फंक्शन का यूज़ किया। रैंक में पार्टीशन बाय कस्टमर आईडी एंड देन ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट। Got it, Harshit. Thanks. गॉट इट, राइट। नाउ हमें यहाँ पे हमें रैंक मिल जाएगा सबका, रैंक 1 2 3। अब तो सिंपल हो गया, राइट। वेर आर के इक्वल टू 1, वेर आर के इक्वल टू 1, तो ये हमारा आ गया रिजल्ट सेट। Yes, yes. ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेरी। ये इसमें थोड़ा चेंज है कि विच आइटम वॉज परचेज जस्ट बिफोर द कस्टमर बिकम अ मेंबर। इसमें थोड़ा चेंज है।
ऊपर वाले में क्या था कि आफ्टर दे बिकम अ मेंबर, इसमें जस्ट बिफोर द कस्टमर बिकम अ मेंबर. Can change order date less than or equal to join date. यस, यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही कंडीशन को डिफरेंट करना होगा. ऑर्डर डेट लेस देन जॉइन डेट, वहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पे हमने लेस देन कर दिया. बाकी सब कुछ सेम ही आएगा, क्योंकि हमें बिफोर फाइंड करना है, नॉट आफ्टर फाइंड करना है, राइट. और ये 2 टाइम्स आया बिकॉज एक ही ज्वाइन डेट क्या है, एक ही ज्वाइन डेट है जुलाई 1, और वो जुलाई 1 को ज्वाइन होने से पहले उसने 1 जनवरी को 2 बार परचेज किया था, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट. सो वो दोनों आएगा यहाँ पे, राइट. क्योंकि डेट सेम है इसलिए, राइट. नाउ लेट मी नो if any question over here. There is no question, right? Hello. Yes, it continue. No questions. Okay, so how do you find this method, guys? This practical approach, any feedback? We will see few concepts also, but in one class we can see few practical examples, and then we in another class we will see few concept, like what is subquery, what is correlated subquery, what is city. Because at the end, data engineer, data analyst, all they are doing writing these kind of queries only on mostly daily basis, because ranking functions, aggregate functions, joins, common table expressions, these are the thing only mostly they are writing day to day basis, right? So now how do you find this approach? So there is nothing like a project. This is, you can consider as a project, right? Because multiple tables they will give us, and from that tables we need to identify the data set, we need to identify, analyze the different tables, and from that they have given us around 10 queries, and from that 10 queries we need to write the solutions, how we can approach the solution. So how do you find this approach, guys? Yeah, it was very helpful, Harshit. Uh, If It's you have very any nice. feedback, then you can tell me also. Uh, yeah. Means if you have any improvement or anything, then also you can tell me. So we will keep up to here for today. And one more thing, tomorrow is a match. Are you guys joining tomorrow or not? Let me know. Or tomorrow we can join. Can you join at 11 o'clock? Tomorrow 11 to 12. Yeah. We can join by morning. That will be possible. Because of match, maybe many people may not join. So I will keep 11 o'clock tomorrow our meeting. Yes. Okay. So on if anyone wants this one, what is query and project, then I will mention one link. In that you need to mention your email address.
I will already, I think many people have mentioned email address over here. You can also write the email address into this Excel file. I will share everything regarding our classes into this email only. Over here, everyone has mentioned, right? I think many of you have already mentioned over here, but I am not aware. You can mention over here, and I will share everything over here only. Okay, it says access required. Or you can write in the chat box. I will access was denied. Okay, you can, or you can WhatsApp me personally, or you can write over here only in our teams, in our call only.